नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और बैंकिंग अपडेट में आईसीसीआई बैंक ने 17,000 क्रेडिट कार्ड कस्टमर के डाटा लीक कर दिए। आईसीसीआई बैंक 17,000 क्रेडिट कार्ड issued to wrong customers. What will happen now? After the RBI ban on Kotak Mahindra Bank related to the mobile banking, now a big news has come to light. Several customers of ICICI Bank have reported that the credit card data of ICICI Bank customer have been compromised. The users are able to see the credit card details of other customer in the mobile app of ICICI Bank. Users have reported the incident on social media platform. You can check as per the tweet. एक साहब ट्वीट करके कहते हैं ICICI Bank major technical glitch. More than 17,000 credit cards were mapped to other users in iMobile app. They could see credit card number, expiry date, CVV details of other customer. Take necessary action if you are a customer of ICICI Bank. Hope RBI takes a note. एक और हमारे कस्टमर लिखते हैं कि कार्ड फ्रॉड, ICICI Bank issued credit card before activation. Fraudulent transaction took place. After blocking the card, transaction continued. In response to the concern raised about a security flaw in ICICI Bank's iMobile app, the bank has issued a statement assuring customer that the swift action will be taken to address the issue. The spokesperson acknowledged that approximately 17,000 new credit cards issued in the past few days were mistakenly linked to the incorrect users, accounting for around 0.1% of the bank's credit card portfolio. As a precautionary measures, these cards have been blocked and new ones will be issued to the affected customer. The bank expressed regret for any inconvenience caused and emphasized that no instances of the card misuse have been reported thus far. Furthermore, ICICI Bank emphasized its commitment to compensating customers for any financial loss resulting from the error. This announcement comes in the wake of reports highlighting a security glitch in iMobile app which allowed users to access the credit cards details of the other customers. On Reddit, user brought attention to a situation where another user's Amazon Pay credit card details were mistakenly displayed. Additionally, users have reported being able to complete ICICI card transaction even when entering incorrect 3 digits CVV. और इस तरह की घटनाएं जो टेक्निकल ग्लिच की हैं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले RBI का बैन कोटक महिंद्रा बैंक को बैन किया गया। उसके पहले बाब वर्ल्ड में गड़बड़ी हुई थी, फिर यूको बैंक में प्रॉब्लम आई थी। और इस तरह से जहां एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो बैंक पर से कस्टमर का विश्वास उठ जाएगा। 17,000 कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का डाटा लीक होना कोई मामूली बात नहीं है। कारण यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल लॉस होने की पूरी संभावना है। बैंक के अपने टेक्निकल स्टाफ को अपने जो सिक्योरिटी सेफ्टी की पॉइंट है उसको ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, ना कि केवल विज्ञापन देके अपनी बड़ाई करने में लगना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं आम कस्टमर को डिजिटलाइजेशन की जाने के लिए रोकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।